As we have understood what is the unit, what are the properties of a unit, let us understand, beta. Let us understand the different types of units. Different types of units. You have studied this. You have studied this in your earlier school days also. There are three different types of units called as NKS, CGS, SPS, where NKS means meter, kilogram, second. CGS means centimeter, gram, second. And FPS means foot, pound, second. That is, you can, when I talk about unit मतलब standard होता है. Standard, there are different types of units. Number one is called as NKS, meter. When length is measured in meter, mass is measured in kilogram, time is measured in second. It is called as NKS system. CGS, centimeter, gram, second. When length is measured in centimeter, mass in gram, time in second. Foot, pound, second. That is, length is measured in foot, mass is measured in pound, time is measured in second. That is SPS system. Yes, when we talk about, guys, normally NKS and CGS हर किसी ने सुना हुआ है. NKS is higher system of units, CGS is lower, and SPS is used in our day-to-day life also. Like, I'm sure that आप बोलोगे सर ये हम कहाँ use करते हैं? Normally day-to-day life में हम बोलते हैं ना, height of a person is 6 feet. Means you are measuring length in terms of feet. Okay, feet. If I say that, जैसे हम घर की बात करते हैं, अपने घर की बात करते हैं, area, my house is big, my house is 1400 square feet. मतलब हम तो area की बात करते हैं, feet into feet, that is square feet, length into breadth, that is square feet. So length is measured in terms of feet. When I talk about pound, normally हम सुनते हैं that if we talk about a newborn baby, if there is a newborn baby, we normally hear that a newborn baby is healthy. A newborn baby is 7 pounds, 8 pounds. That means you are measuring mass in terms of pound. There is an MCQ which comes that the unit which measures the same in all is called as time. Time in NKS, CGS, SPS, हर जगह पे उसका यूनिट सेम होता है. बाकी सबका चेंज हो रहा है, लेकिन टाइम का यूनिट remains the same in all system of units. So now, when I say NKS, CGS, SPS, now इसमें difficulty समझो. इसमें difficulty समझो. अगर तीन अलग-अलग system of units है, तीन अलग-अलग, if I say different types of system of units, if there are different system of units, आपको लगता है तीन अलग-अलग है, तो कोई कंट्री बोलेगा हम तो भाई NKS यूज करेंगे, कोई बोलेगा हम CGS यूज करेंगे, कोई बोलेगा आप SPS, आप NKS, वो CGS, तो हम सबसे अलग हम SPS यूज करेंगे. So what happens is, अगर हर कंट्री अगर अलग-अलग सिस्टम ऑफ यूनिट फॉलो करेगा तो डिफिकल्टी हो सकती है. Because अभी now those days have gone when you whatever we invent we keep it with ourselves. ऐसे नहीं होता है. Now it is worldwide integration. Global level पे हम बात करते हैं. So अगर हर कंट्री अगर different system of units follow करेगा तो दिक्कत होगी. That is why in the year of 1972 in Paris there was a conference held up and it was decided that all these things for all scientific calculation, all these system of units, and there was all these system of units were ruled out, and there came a new system of unit called as SI units. SI unit. Okay, for all scientific calculation, we use SI units only. Now MKS, now CGS, now SPS. We use SI units, and this SI units are also called as RNKS system of units, which means rationalized meter, kilogram, second system of units. Actually, to be honest with you,
वो लोग ने क्या किया मैं बताता हूँ। वो लोग ने क्या बोला, ऐसा डिफरेंट 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 है ना, तो एमकेएस को थोड़ा बहुत चेंज करके नया नाम दे दिया। दैट इज वाई कोई कोई बुक में आर का मतलब रिवाइज भी लिखा है, रिवाइज मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बट यस टेक्निकली इट इज रैशनलाइज्ड मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स called as SI units, called as SI units. So SI unit is also called as RMKS. Why? I just told you. And today for all scientific calculations, we use only and only SI units. हम कोई और यूनिट की बात ही नहीं करते। Yes, measurement करते वक्त higher मतलब SI, lower मतलब CGS, और कोई यूनिट हम फॉलो नहीं करते हैं, which we will not do it even in our chapters of our physics also. Higher means SI, lower means CGS. Okay, lower means CGS. So as we are talking about units, beta, as we are talking about units, why do we require units? Sir, units are required to measure physical quantities. हमने देख लिया different types of units. Now, units are required to measure physical quantities. Let us understand different types of physical quantities. Different types of physical quantities. Different types of physical quantities. But there are three different types of physical quantities. One is called as fundamental quantities. One is called as fundamental quantities. आपने सुना होगा। Number two is called as derived quantities. Derived quantities. And number three is called as supplementary quantities. Number three is called as supplementary quantities. One by one. When I say the first quantity is called as fundamental quantities. What is fundamental quantities? I can say that physical quantities. Physical quantities का मतलब क्या? Anything which can be measured. So physical quantities which do not depend on any other quantity for their measurement are called as fundamental quantities. Physical quantities which do not depend on any other quantity for their measurement are called as fundamental quantities. मतलब physical quantities which are independent. They do not depend on anyone for their measurement are called as fundamental quantities. When I say derived quantities, in other words, physical quantities which depend on one or more than one fundamental quantities for their measurement are called as derived quantities. Fundamental मतलब independent. Fundamental मतलब independent. Fundamental मतलब independent. And derived मतलब it is dependent. It is dependent on fundamental. Derived मतलब it is dependent on one or more than one fundamental quantities are called as your derived quantities. I explain it. And supplementary quantities, there is something different. हम इसके बारे में भी बात करेंगे. But right now, when I talk about fundamental quantities, basically हम दो के बारे में बात करते हैं, but ये भी होता है, मुझे आपको बताना था. So yes, when I talk about different types of physical quantities, there are basically two types, fundamental and derived. But now there exists one more category that is called as supplementary quantities. Let us study one by one, all of them in detail. Let us study all of them in detail. When I talk about fundamental quantities, they are units and symbols. Of course, units, जब हम यूनिट की बात करते हैं तो SI यूनिट की बात करते हैं. What is fundamental quantities? Physical quantities which are independent, which do not depend on any other quantity for their measurement are called as fundamental quantities. They are your length. आपने किया ही होगा केमिस्ट्री में. Length, mass, time, temperature, electric current,
luminous intensity, luminous intensity, and last is amount of substance. Last is amount of substance. Okay, beta, these are your only 7 fundamental quantities. These are your 7 fundamental means. Okay, I can say there are n number of physical quantities, n number, out of which these are 7 quantities which are independent. It has been proved that ये independent है, इनको measure करने के लिए आपको किसी और चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है. For example, अगर मैं बोलूं my height is 6 feet, 6 feet का मतलब होता है 2 meter, 2 meter. My height is 2 meter. बेटा that's it. मेरे को और कोई चीज बोलने की जरूरत नहीं है. I don't need to say that my height is 2 meter when it's 6 o'clock in the evening. क्यों? भाई रात को 9 बजे क्या होने वाला है? It will be the same, right? So that is what I'm saying. That to measure length, okay, you don't require the help of any other quantity. I say that I am carrying 5 kg of sugar. Yes, I don't need to say 5 kg of sugar when I'm facing the north. If you face the west also, it will be the same. Okay, time. Right by my watch, as I can say that, 2:15. 2:15. Yes, that's it. I don't need to say 2:15 when I'm facing the north or facing the west or facing the east. नहीं फर्क पड़ता है. It is always the same. So yes, these are some quantities which are independent. Yes, if I want to write down their SI units, if I want to write down their SI units, length का SI unit, meter, symbol is n, small n. Mass is kilogram, that is kg. Time beta is second, that is s. Temperature is Kelvin, capital letter K. Electric current is ampere, capital letter A. Luminous intensity is candela, it is Cg. Sometimes it is also called as lux. जब हम बोलते हैं lux, बेटा साबुन नहीं. Lux indicates the brightness. Lux indicates brightness, and that is why we say the name of the soap, lux. It gives you brightness. It indicates brightness. That's another meaning of luminous intensity. Okay, candela. An amount of substance is mole. This is mol. So when we talk about, when you look at the SI unit and symbols, okay, these are your SI. कहीं नहीं बोलने का meters, kilograms, seconds, no. सब कुछ singular होता है. मैंने पहले ही बता चुका हूँ. These are your 7 fundamental quantities. Why do we require units? Units are required to represent SI units. Units are required to represent SI unit. SI unit is required to explain, to measure your fundamental quantities. Okay. So if I ask you, what are your 7 fundamental quantities? They are your length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, and amount of substance. What was both? Length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, and amount of substance. Let's visualize our table. अगर मैं length की बात करता हूँ, length का SI unit is meter, symbol is small n, mass, kilogram, kg, time, second, s, temperature, Kelvin, capital letter K, electric current, ampere, capital letter A, luminous intensity, candela, Cd, amount of substance, mole, mol. Why do we require the symbols? Symbols are required to represent your SI units. SI units are required to measure your fundamental quantities. Yes, हमने बोल दिया that these are your 7 fundamental quantities. Look at this बेटा. अगर आप ठीक से देखो, SI unit and symbols के टेबल को देखो. There is a particular way of writing down the SI unit and symbol. SI unit and symbol को लिखने का एक तरीका होता है. आप कैसे भी नहीं लिख सकते हो. There are some rules for SI unit and symbols. Let us study those rules in detail now. So I will say
rules for SI unit and symbols. The first rule says that a symbol of a unit should not contain a full stop. A symbol of a unit should not contain a full stop. Normally हमारी आदत होती है जब हम सिंबल लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखने के बाद में हमारी आदत होती है डॉट डालने का. That is wrong. A symbol of a unit should not contain a full stop. Okay. Number 2, a symbol of a unit remains the same even in its plural form. मतलब if I say 5 kg, 5 kgs नहीं होता है. 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg. There is, we write like this, 2 kg लिखते हैं. This is correct. 2 kgs. ये wrong है. Okay. 1 kg आप लिखते हो, लेकिन जब 2 kg लिखना होता है, you write 2 kgs. No, that is wrong. ये गलत तरीका है. Okay. It remains the same even in its plural form. Why? ये already मैं आपको बता चुका हूँ. Okay. Then a symbol of a unit named after a person should start with a capital letter. A symbol of a unit named after a person should start with a capital letter. मतलब अगर कोई एक सिंबल है, अगर किसी आदमी पे लिखा है, जैसे हमने केल्विन बोला था, केल्विन इज नेम्ड आफ्टर अ पर्सन, सो उसका सिंबल विल बी कैपिटल. न्यूटन नेम ऑफ अ पर्सन कैपिटल है. एम्पियर नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट, so capital. Okay, so if a symbol of a unit is named after a person, then it should be starting with a capital letter. Then symbol of a unit not named after a person should start with small letter. चलेगा. Should start with a small letter. Means if I say that, for example, kilogram, but अगर हम kilogram लिखते हैं, kilogram is not named after a person, so kilogram को कैसे लिखोगे? kg. ना, second is not named after a person, उसका symbol will be small s. Okay, length is meter is not named after a person, so it is small s. Okay, लेकिन अगर कोई किसी नाम के ऊपर, किसी बंदे के ऊपर उसका यूनिट है, तो उसका symbol will always be capital letter. And last rule is that all units should start with a small letter. All units should start with a small letter. Guys, ये बात समझ लो, यहाँ पे ये बात समझो. अभी मैंने टेबल बनाया था, आपको याद होगा, क्वांटिटीज बोला था, फिर मैंने एसआई यूनिट बोला था, फिर मैंने सिंबल बोला था. ऐसे हमने टेबल बनाया था, बराबर. इसके पहले हमने ये टेबल बनाया था. रूल नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 they are applicable for 1 2 3 and 4. They are applicable for symbols. And rule number 5 is applicable for unit. So all units, whether it is named after a person or not, I don't care. All units will be written by a small letter only. एक बार वापस देख लेते हैं, अच्छी तरह से देख लेते हैं. If I write mass, बेटा, mass is kilogram. Kilogram का symbol is kg. Length is, if I say length is meter, small n. Then if I say time is second, that is small s.
Then if I say electric current is Kelvin, capital letter K. Then temperature, my mistake. Okay, electric current is ampere, beta. My mistake. Ampere. Temperature is Kelvin. Capital letter K. Then if I say luminous intensity was candela, CD. And amount of substance was mole, MOL. Please check it out. What is the first unit? What does the first rule say? That a symbol of a unit should not contain a full stop. हमारी आदत होती है जब हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो डॉट नहीं खेलने का. ये गलत है. A symbol of a unit should not contain a full stop. ये गलत है. Number 2, symbol of a unit remains the same even in plural form. It is always 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, kgs, newtons, amperes, kelvins, candelas. ऐसा कुछ नहीं होता है, वो गलत होता है. There is nothing called as plural form. A symbol of a unit named after a person should start with a capital letter. Please check it out. Symbol को देखो. Can you see that? Symbol starting with capital letter. Why? Because their unit is named after a person. अगर किसी का यूनिट किसी बंदे के ऊपर है तो उसका symbol will start with a capital letter. Then fourth one, symbol of a unit not named after a person should start with small letter. बाकी symbol देखना, they all are small letters because they are not named after a person. And rule number 5, all units, unit वाला column देखो, unit वाला. If it is named after a person or not, I don't care. All units will start with a small letter. So rule number 1, 2, 3, 4 are applicable for symbols, and rule number 5 is applicable for units. So what is the rules, beta? Number 1, both symbol of a unit. Come on, everyone. Symbol of a unit should not contain a full stop. Number 2, symbol of a unit should remains the same even in its plural form. How about number 1? Symbol of a unit does not contain the full stop. Symbol of a unit remains the same even in its plural form. Number 3, symbol of a unit named after a person should start with a capital letter. Number 4, symbol of a unit not named after a person will start with a small letter. And number 5, all units will start with a small letter. All units will start with a small letter, and I showed it to you guys over here. That is what I mean to say, that these are the rules. जब भी हम ऐसा यूनिट और सिंबल लिखते हैं, ये रूल हम फॉलो करते हैं. Not only for fundamental quantities, for derived also. ये रूल तो सबके लिए. ये रूल सिर्फ फंडामेंटल के लिए नहीं. मैंने तो few एग्जांपल लिए थे फंडामेंटल को दिखाने के लिए, और उसी में मैंने आपको रूल्स भी समझा दिए. Okay, that is your rules for your SI units and symbols. बेटा SI units and symbols. चलो हमने देख लिया that there are 7 fundamental quantities. एक बार वापस बोलेगा बेटा 7 fundamental quantities. जरा बोलते जा. It is what? Length. आगे length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, and amount of substance. One more time. Length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, and amount of substance. These are your 7 fundamental quantities. Fundamental का मतलब क्या होता है? Independent. They do not depend on any fundamental quantity. They are independent. They do not depend on anyone. उसके बाद में एक आता है जिसको हमने derived बोला था. So let us understand few derived quantities. I am taking few because there is no end to it. हमने क्या realize किया? There are 7 fundamental. अगर ये 7 fundamental को छोड़ दे, बाकी सब quantities, they are your derived quantities. Let me justify my statement. I am writing over here
quantities. Okay, I will write formula. मैं जानबूझ के लिख रहा हूं formula, SI unit and symbols. ठीक है, चलो वन बाय वन लेट अस टॉक अबाउट ना, वन बाय वन मैं आपसे पूछने वाला हूं. चलो लेट अस सी हाउ मच यू रिमेंबर. एरिया, बेटा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मीटर इनटू मीटर क्या हो गया ये? कैन आई कॉल दिस एज स्क्वायर मीटर? मीटर इनटू मीटर इज स्क्वायर मीटर. सिंबल कैसे लिखेगा? m square. Finish. If I ask you volume, length into breadth into height, मीटर मीटर मीटर, इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक मीटर. That is meter cube. That is called as meter cube. Okay. Then, if I ask you density, अगर मैं आपसे पूछूं what is formula for density? डेंसिटी का फॉर्मूला अगर याद होगा, मास अपॉन वॉल्यूम. बेटा मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम. किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. बराबर ना? मास मतलब किलोग्राम, वॉल्यूम मतलब क्यूबिक मीटर. तो मास पर क्यूबिक मीटर कैसे लिखेगा तू? केजी पर मीटर क्यूब. समझा? m रेज़ टू -3. बेटा वैसे लिखते हैं ना केजी अपॉन m क्यूब. ये m क्यूब को जब ऊपर लेके आए तो m-3 हो गया ना. ओके, चलो दैट वाज अबाउट योर डेंसिटी. कोई मुझसे पूछे डिस्टेंस, डिस्टेंस व्हिच इज अ स्केलर, अगर याद है आपको तो डिस्टेंस इज पाथ लेंथ. पाथ लेंथ. ओके, डिस्टेंस इज पाथ लेंथ. लेंथ ऑफ द पाथ इज डिस्टेंस. यस, इट इज मेजर्ड इन मीटर. सो इट इज. अगर मैं आपसे पूछूं ना, फन थोड़ा सा मस्ती कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फाइनल पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फाइनल पोजीशन. एग्जांपल ले लो. एक बॉडी ए से बी गया, ए से गया, ए से बी ऐसे गया. तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या बोलोगे? डिस्टेंस विल बी हाउ मच? पाई आर. अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है ना, ये रेडियस है, तो इट इज व्हाट? 2 पाई आर. नहीं, 2 पाई आर तो पूरा सर्कल होता है, ये सेमी सर्कल हुआ ना, तो पाई आर. कोई मुझसे पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो मैं बोलेगा 2r. क्यों? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फाइनल पोजीशन. सो डिस्प्लेसमेंट आई विल से इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ऐसे ही मैं तो मस्ती कर रहा था. ओके, यूनिट क्या है उसका बेटा? मीटर, व्हिच इज m. ओके, मैं आपसे पूछूं स्पीड और वेलोसिटी. स्पीड इज अ स्केलर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर. स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ये आपको मालूम ही अच्छी तरह से. लेकिन दोनों का यूनिट क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड. मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन. Acceleration, you will say that is velocity upon time. Velocity upon time मतलब ये velocity के नीचे time. So what is the meter per square second? So that is meter per second square. ये acceleration हो गया. Acceleration का formula सबको मालूम है? Change in velocity upon time. Acceleration का formula change in velocity upon time. Change in velocity upon time. It is a scalar or vector? Sir, vector. Acceleration is a vector. Then मैं आपसे पूछ रहा हूं momentum. Momentum study किया होगा. Momentum
मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, मास मतलब किलोग्राम, वेलोसिटी का मतलब मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड, सो क्या हो गया ये केजी मीटर पर सेकेंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। I've just taken few quantities, right? Area, volume, density. हर एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये सब हम 10th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, डिस्टेंस का मतलब पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फाइनल पोजीशन, स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, थोड़ा और टेबल बनाते हैं, थोड़ा और टेबल बनाते हैं, थोड़ा सा करते हैं ना, थोड़ा सा और क्वांटिटीज करते हैं, मजा आ रहा है। क्वांटिटीज, फॉर्मूला, एसआई यूनिट एंड सिंबल, सिंबल। चलो थोड़ा और क्वांटिटीज की बात करते हैं, थोड़ा भी अलग करते हैं। चल बेटा, फोर्स, फोर्स मतलब क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन, न्यूटन, सिंबल क्या है बेटा, एन। यस, ओके। चलो फोर्स के बाद में कुछ और सोच, ओके। मैं बोलता हूं प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, इट इज आल्सो कॉल्ड एज पास्कल, पास्कल, पी बोला, पी पी, ज्यादा आगे मत सोचो, ज्यादा आगे मत सोचो, पास्कल, पास्कल, ओके, पी कैपिटल, पी। देन इफ आई से, ओके, और क्या सोच सकते हो, ओके, पावर, 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 पावर मींस आई कैन से व्हाट, और चलो पहले एनर्जी देते हैं, या वर्क, वर्क इज व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, SI यूनिट इज जूल, जे, जूल है, जूल, जूल नहीं है, पूरे परिवार ने कुछ काम नहीं किया, अकेले काम किया बंदे ने, ओके। इफ आई से पावर बेटा, पावर, पावर, पावर इज व्हाट, वर्क अपॉन टाइम, ये सब फॉर्मूला हमको आता है 10th स्टैंडर्ड का, वर्क अपॉन टाइम दैट इज वैट, दैट इज W, वैट, W, और वॉट कुछ भी कह लो आप, ओके। नाउ एक मिनट, अगर आप ये, मैंने तो कुछ 12 क्वांटिटी ऐसे जो मेरे दिमाग में आया मैंने लिख दिया, फटाफट लिख दिया, ओके। अगर आप ठीक से देखो, पहले 8 क्वांटिटी की बात करो, 8 क्वांटिटी, ये जो ब्लैक में लिखा है, आपको लगता है एरिया मीटर स्क्वायर, कैन आई से इट डिपेंड्स ऑन अ फंडामेंटल क्वांटिटी कॉल्ड एज लेंथ, और हाउ मेनी टाइम्स, ट्वाइस। देखना, व्हाट डू यू मीन सेइंग डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटीज डिपेंड ऑन फंडामेंटल। देख सिंबल्स को देख के मालूम पड़ जाएगा, एरिया डिपेंड्स ऑन अ फंडामेंटल क्वांटिटी कॉल्ड एज लेंथ, हाउ मेनी टाइम्स, ट्वाइस। Volume depends on a fundamental quantity called as length. How many times? 3 times. Density depends on 2 fundamental quantities, mass and length. Mass कितनी बारी? एक बारी. Length कितनी बारी? 3 बारी. Distance depends on 1 fundamental quantity, that is length. Volume, displacement, 1 fundamental quantity, that is length. Speed or velocity depends on length and time. Acceleration, length and time, length once, time twice. Momentum depends on 3 fundamental quantities, mass, length, time. Force की बात कर, force जरा ठीक से देख, mass into acceleration, mass को क्या लिखेगा, kg, acceleration को क्या लिखेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी देख के बता, can I say it depends on 3 fundamental quantities called as length, mass and time. Length, mass कितनी बार, 1, length कितनी बार, 1, time कितनी बार, 2 बार। Pressure, force upon area, force तो मालूम नहीं है, upon area कर ले, upon area, kg
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। कुछ कैंसिल भी होगा क्या? कुछ कैंसिल होगा, 1 मीटर इधर से 1 मीटर इधर से गया। तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटी, मास, लेंथ एंड टाइम। ये लेंथ को ऊपर ले लिया तो m -1 हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ एंड टाइम। वर्क इज व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तेरे को मालूम है, फोर्स तेरे को मालूम है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट कौन है? मीटर। मीटर इनटू मीटर कितना हो गया बेटा? मीटर इनटू मीटर कितना हो गया? मीटर स्क्वायर सेकेंड। It depends on how much? 3 fundamental quantities: mass, length, time. Power is what? Work upon time. Work तो देखो मालूम ही है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन टाइम। टाइम तो सेकेंड होता है, सेकेंड को ऊपर ले गया, कैसे s -3 हो जाएगा। So can I say that? Can I say that when you look at this, guys, when you look at this table, आपको लगता है ये टेबल से by looking at the symbols, I can actually understand that a given quantity depends on which fundamental, how many fundamental, and how many times of fundamental. I repeat, by looking at the symbols, we can understand the given quantity depends on which fundamental, how many fundamental, and how many times of fundamental. Papa told, area depends on how many fundamentals? 1. How many times? Twice. Volume depends on how many fundamentals? 1. That is length. How many times? 5. Density depends on 2 fundamentals. Mass and length. Mass 1, length twice. Distance and displacement depend on 1 fundamental. That is length. Speed or velocity depends on 2 fundamentals. Mass and time. Acceleration depends on mass and time. Momentum depends on mass, length, time. Force, pressure, work, power depends on mass, length, time, mass, length, time. और कितनी बारी वो पावर देख के समझ में आ जाता है. So can I say that they depend on one or more than one fundamental quantity? They depend on one or more than one fundamental quantity. So they are called as your derived quantities. That is why हमने बोला था that there are 7 independent quantities. There are 7 independent quantities. और ये सातों को छोड़ के बाकी सब all depend on one or more than one fundamental quantity. They are called as your derived quantities. There is no end to it. It can go on and on and on, and everything will boil down to the same thing. I'll prove it also. I'll prove it in my further lectures. अभी तो just चालू किया है यार. अभी तो just चालू किया है. Okay. So this is your few derived quantities which I said. इसलिए मैंने हेडिंग में भी लिखा था few derived quantities. So हमारे पास कितने physical quantities हैं? हमारे पास कितने physical quantities हैं? हमारे पास है fundamental जो independent होते हैं, फिर होते हैं derived जो fundamental पे depend करते हैं, और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं supplementary quantities. जिसको हम बोलते हैं supplementary quantities. What are these supplementary quantities? हुआ क्या मालूम है? एक्चुअली स्टोरी ऐसा था कि लोगों ने फंडामेंटल बनाया, डिराइव्ड बनाया, सब कुछ बना दिया, फिर रियलाइज हो गया अरे यार ये तो छूट गया, तो उसको सप्लीमेंट्री नाम देके वो लोग भी बाजू में हो गए. ओके, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दे आर कॉल्ड एज योर प्लेन एंगल and called as solid angle. One by one, let me explain it. Plane angle बेटा एक जनरल बात करते हैं. पहले हम जनरल बात करते हैं. If we talk about in geometry, how many axes do you know? Sir, I know 3 coordinate axes: x-axis, y-axis, and your z-axis. We know 3 coordinate axes. In geometry, we know 3 coordinate axes: x-axis, y-axis, and z-axis. For a while, z-axis को भूल जा. हम सिर्फ x और y-axis को लेते हैं. If you consider only 2 axes at a time, you will get a plane. 2 axes at a time means angle in 2 dimensions.
सॉलिड एंगल का मतलब इट इज एंगल इन 3 डायमेंशन। जब आप तीनों एक्सिस लेते हो, x, y एंड z एक्सिस लेते हो, तो जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। जब हम दो एक्सिस को लेते हैं एट अ टाइम, इट इज कॉल्ड एज प्लेन एंगल। ओके, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मैक्सिमम वैल्यू is 2 pi, that is 360 degree. 360 degree, देखना x axis और y axis लेना, what is the maximum angle? 360 degree. इसमें maximum value is 4 pi radian. 4 pi radian. Plane angle का SI unit is called as radian, RAD. और सॉलिड एंगल का SI यूनिट इज कॉल्ड एज स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, S स्मॉल r। प्लेन एंगल सबको मालूम है, हमने किया हुआ है ज्योमेट्री में, 10th स्टैंडर्ड में आपने किया है। सॉलिड एंगल का एक एग्जांपल देता हूं। बेटा इमेजिन कर आपके पास एक कोन है, कोन आइसक्रीम का कोन लेते हैं ना, कोन, आइसक्रीम का कोन। तो ये जो एंगल बनता है अंदर ये एंगल, कोन के अंदर का पूरा एंगल ऐसा, दैट एंगल इज कॉल्ड एज योर सॉलिड एंगल। दैट इज योर सॉलिड एंगल। वी विल स्टडी दिस इन आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हम इसको डिटेल में करेंगे। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, दैट देयर आर फंडामेंटल क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट, derived which are dependent on fundamental, and there are two supplementary quantities which are called as plane angle and solid angle. Simple words में plane angle का मतलब angle in 2D, solid angle मतलब angle in 3D. 2D का maximum value 2 pi and solid angle का maximum value 4 pi. What is the SI unit of plane angle? Radian. SI unit of solid angle is radian. So guys, in our today's lecture of interaction, in the first lecture, we will keep the first lecture थोड़ा सा soft and थोड़ा सा, because just start किया है ना. So once we get the interaction between us, we will talk about little more करते जाएंगे. Okay. First lecture we will keep it restricted. What we did in the first lecture, number one, we did our fundamental quantities. What is fundamental quantity? Any quantity which can be measured is fundamental quantity. Then unit, a standard or a reference which is used for measurement is called as a unit. Yes, can anyone become a unit? No, a unit should have three properties. Number one, easily available and reproducible. It should not be perishable and it should be the same at all places and at all times. How many types of units? 3, MKS, TGS, FPS. But all these system of units were ruled out, and there comes a new system of unit called as SI unit, also referred as RMKS. क्या बोलेगा? RMKS system of unit, which is rationalized meter, kilogram, second system of units. Yes. Then we said, why do we require units to measure physical quantities? How many types of physical quantities? 3: fundamental, derived, and supplementary. Fundamental means independent, derived means dependent on fundamental, and supplementary means yes, जो छूट गया था बाद में नाम दिया उसको supplementary. Yes. What are your 7 fundamental quantities? They are, come on everyone: length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, amount of substance. One more time guys, come on everyone: length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, amount of substance. Table याद करते हैं. Table. Length का SI unit meter, small m. Mass kilogram, kg. Time second, s. Temperature, electric current. Temperature is Kelvin, capital letter K. Electric current, ampere, capital letter A. Luminous intensity, that is candela, also called as lux. CV, amount of substance is mole, MOL. But when you write down the SI unit and symbol, there are some rules which we follow. There are 5 rules. Number one, a symbol of a unit. Next, number 5 units, 5 rules. 4 are there for symbols. 1 is there for a unit. Go ahead. Number 1, symbol of a unit should not contain a full stop. Symbol of a unit remains the same even in its plural form. Symbol of a unit named after a person, so start with a capital letter. Symbol of a unit not named after a person will start with a small letter and all.
units will start with a small letter. Yes. In addition to fundamental quantities, we made a table to see that excluding the 7 fundamental, rest all depend on one or more fundamental quantities. Then we highlighted supplementary quantities, plane angle and solid angle. Plane angle का मतलब angle is 2D, unit is radian. Solid angle मतलब angle is 3D, a unit is steradian. Maximum value of plane angle 2 pi. Maximum angle in maximum solid angle is 4 pi. Yes. So now what we can be conclude that there are 7 fundamental, 2 supplementary. क्या बोला? 7 fundamental, 2 supplementary. इनको छोड़ने के बाद बाकी जो भी बचा वो सब आपका derived quantities है. वो सब आपका derived quantities है. So guys, we have just done today units and quantities. That is what we have done today. When we meet next, we are going to talk something more. We will learn something more, and we will stop over here. What you need to do, beta, is there will be a handwritten note, scanned copy में भेजूंगा. That scanned copy, you have to make a fresh new notebook. नया notebook बनाने का. उस नए notebook में जैसे scanned copy में लिखा है वैसे आपको लिखना है. No xerox, no xerox, no printing, कुछ नहीं. लिखने का. One fine day I am going to ask your parents, I am going to hold a Zoom meeting of your parents and ask your parents to show me the book one by one. One by one. Parents will have to show the book. Okay, one by one. I will have independent Zoom session with parents. मैं करेगा. मैं क्या क्या कर सकता है? You also don't know मैं क्या क्या कर सकता है. Okay, simple लिखने का. रोज का काम रोज लिखने का. जितना मैंने बोला उतना करने का. Okay, so guys, when we meet next, yes, as such, no homework today, no practice paper today because we have just started with it. Gradually, as we move ahead, we will talk about more and more, and we will go ahead with it. This is what I have to speak about it, guys. That's all from me. Thanks a lot, guys. God bless you.